All right. Uh, Today we will study another very interesting data communication interface, which is uh, highly popular in embedded systems and very often used among different peripheral devices. That is uh, basically used inside the embedded system. So and the topic today's topic is basically the I2C bus. Usually we write I2C. That's like I2C. So I2C basically is the short for inter-integrated circuit. So this is the complete nomenclature of the I2C, but in generally we say like pronounce it in the way like I squared C or I2C. These are the two terms which usually hear, and you can easily identify them by this specific symbol, kind of the way it is written here. So I2C basically is another very important synchronous serial communication protocol used in embedded systems. So it's a two-wire serial bus specification. If you remember in the SPI case, we found out that there are four communication lines used between the SPI master and the slave. But here in the case of I2C, we have two-wire serial bus specification. So it means we have only a couple of wires that needs to be connected between devices to establish communication using I2C protocol. Now, when it comes to the background of this specific protocol, well, I2C is developed by Philips Semiconductors. It was like nearly 20 years ago, and I2C is a two-wire serial bus protocol, as we have just seen on the screen. This protocol actually enables peripheral ICs in electronic systems to communicate with other electronic systems uh, like which we can say like a simple communication hardware. So based on the original specification of the I2C, data transfer rates of up to 100 kilobits per second can be achieved in this specific protocol. And there is an addressing scheme also in this protocol, which is usually defined as a 7-bit addressing, which is possible. Okay, in this case, we will of course get to know more about this specific protocol in the slides, and like which we'll see after this one. And so, yeah, it's a Philips semiconductor protocol. I mean, they basically developed this standard, and the division is now NXP was a patented protocol, but patent has now expired. Anyways, this is not important. So let's get to the protocol itself. So originally, Philips basically designed this for television sets, and now it's very common, becomes very common bus standard. And of course, as I said before, it's very like commonly available in embedded systems. So Philips, National, Zycor, Siemens, all the use this protocol, and also used in PCs. RTC means real-time clock, temperature sensors, and variant in the SM bus, system management bus. So this is a very quick general overview of the I2C, but we have to get into the detail, of course, to properly understand the operation of the bus. So here in this case, we have this I2C bus architecture. So in I2C bus, we have a very simple configuration, something like here, and then a more complicated way of connecting multiple I2C compatible devices in this diagram. So I would like to start with this simple configuration, like how we can connect multiple I2C compatible devices over the bus. So the scheme is very simple. As I stated before, we have only a couple of signals like, and these are SDA and SCL. So we have only two physical signals in the I2C bus protocol. One is SDA. SDA means serial data, and SCL means serial clock, as it is again a synchronous communication protocol. So therefore, we must have a clock signal for this uh, design. So we have these two signals, and otherwise we have these CMOS, NMOS, and bipolar. These are kind of sensors which are integrated or which are connected
in this system. So so the scheme is very simple. Only two wires are required, and there's some additional components which we can see here. A couple of pull-up resistors, and they are actually tied up here with the VCC or plus 5 volt with plus minus 10% tolerance. So these are generally called the pull-up because you are pulling the signal up to the high level. High level is plus 5 volt, and it is basically applicable to both the signals, both SD and SCL. And yeah, here basically I find it extremely necessary to inform you that you cannot use I2C bus without these polar resistor because it will not work. So it is basically a recommended setting when it comes to the hardware that you have to provide these two couple of polar resistors so that the I2C bus can function properly. So I will tell you exactly what is the reason behind this and why you have this polar resistor in the future. But for now, keep in mind that this is very compulsory in the design of the I2C bus. Okay, so yeah, otherwise you have these kind of systems, I2C compatible devices, which you have to use, so you can just straight away connect them to on the bus, and it's kind of a shared bus. So yeah, the principle is very simple, which you will also have to look at in the future. So I2C standardizes for classes. These are the couple of signals: SCK, SDA, and the Philips and NXP, of course, is the actual designer, the manufacturer. Okay, so once you understand this basic operation, this basic design of the I2C, then we will be able to understand the complex system which is illustrated here. What are the why it is so complex, and what are these other aspects of the design. But for now, let's focus on this simple architecture which is illustrated here. First, we need to get the details of these architecture, then we'll be able to understand the complexity. Okay, so the detail is two-wire serial protocol with addressing capability. Yeah, this is also a very distinct feature of the I2C, because if you remember, for the case of SPI, we didn't have any kind of addressing mechanism, but in this protocol we have the addressing mechanism, and it supports speed up to 3.4 megabits per second, which is also very interesting. But what limits I2C to push to such small speeds? We also have to look into these things, why it is so. And this is another very important aspect of I2C, when we compare it with the SPI. It's a multi-master architecture. And if you remember, when we were discussing SPI, it was mentioned that it can only have a single master on the bus at a time. But in contrast to that, this is a multi-master architecture. And open collector, bus driver, and pull-up resistors, again, it's more towards the hardware side. So we don't have to care much about this for now. So it's basically the hardware point of view points here. And so multi-master, multi-slave, so yeah, and uses bus arbitration. Of course, like in SPI, the master can only initiate the transaction, the data communication on the bus, because it is always a master who can initiate it. But if you have multiple masters, then of course there must be a mechanism to arbitrate the access of the bus. So yeah, this specific protocol uses bus arbitration. And what is that arbitration mechanism? We will also get into details in the later in the slides. So yeah, this is a general details of the I2C. And now the wiring aspect, I2C two lines. As I stated before, SDA is serial clock data and SCL is serial clock. And open collector design, it's more about electronics, so forget about it for now. So generally we need only two wires for the I2C. Okay, I2C clock, not a traditional clock. We will also look into the clock when we will study the diagram, the timing diagram of the signal. And normally is kept high using a pull-up, because as I told you before, we place a pull-up resistors on both the lines, so usually they are kept in the high state. And then pulse by the master during data transmission, means the master basically control the data transmission, and as it is kept high usually, so it must be pulsed by the master during data transmission. Master could be either the transmitter or receiver. Okay, this is also very interesting. Sometimes we get confused, but master is not means that it can only transmit. Master can receive as well. So this is, you have to keep this like concept in your mind. Master slave is different aspect, and transmitter and receiver is totally different aspect. So if you cannot confuse like master with the transmitter, master is not the transmitter. Master is basically the role of the
device on the network. So master basically has overall control of the network or the bus. But when it comes to transmission reception, either master or slave can do these both things. Okay, slave device can hold clock low if needs more time. Allow for control means slave devices have the capability to keep the clock lines low if it is required. I mean, if there is some kind of delay, it needs to have. So, in ultimately, what I'm trying to say is that this is a flow control mechanism which is also available in this architecture, in this design, in this protocol. So yeah, slave can actually control the device operation in a way that it can keep the clock signal low if it is highly required. Now, this is an important point. Transmitter and receiver differs from master slave. This is what I'm trying to say before. This is something which you need to understand very well, because master initiates transactions. Slave only responds, means slave cannot initiate the transaction. Transactions are always initiated by the master. Slave definitely can respond to the transactions. And transmitters sets data on SDA line. Slave acknowledges, means transmitter. Now see, transmitter receiver differs from master slave. This is the master slave role, and this is the transmitter that sets data on SDA line. Slaves acknowledge, it means transmitter can transmit the data on the data line, and slave must acknowledge it. Remember, if you remember the SPI, there was no acknowledgement mechanism. So here we have also a mechanism of acknowledgement. So we have already seen so many differences between SPI and I2C protocol. So for a read, slave is transmitter. Read and write basically is always with the perspective of the master. So when we say read, means master will be reading, and when we say write, means master will be writing. So for a read, slave is transmitter, and for a write, master is transmitter. So this is something which you have to keep in your mind and never get confused about it, because you might get confused sometimes because of the terminologies of master, slave, and transmitter, receiver. So yeah, transmitter is it can be a master, can be a slave, and it doesn't matter. But yeah, the transaction is always initiated by the master. And when we say read or write operations, so it always must be with the reference of the transmitter, because when we say sorry, master, when we say read, slave is transmitter, means reading means with the perspective of the master. And for the case of write, it is always with the perspective of the master, because who is reading and who is writing. So read and write basically are described with the perspective of master in our mind. So, okay, uh, and how a transaction establishes on the I2C bus. Well, this is another very important and distinct aspect of I2C protocol. Master basically pulls SDA low while SCL high. This is the indication of the start condition, because as we already know, both the lines are pulled up by the hardware components, the resistors to and the VCC signal. So if both of them are pulled high, which means that like if there's nothing happening on the bus, both the signal will be in the high state, both the clock and the data. So how will we identify, or what will happen when the transition starts? This is the pattern which basically help us identify the start of the transaction. And what it says that if we have if we have seen high to low transition on the SDA line while the clock is high, it basically identify the start of the transaction. So master pulls SDA low while SCL is high, means you can see SCL is high here in this case, and when SCL is high, the master basically drags it down to the lower level. So this transition from high to low makes a start condition. So this is very important aspect of the I2C protocol. You have to keep this information in your mind, that how will we identify the start condition. And normal SDA changes only happen when SCL is low. Okay, means this is basically the identification of the start condition, and this is basically means when the SCL SDA changes, when it is allowed to change its state.
So normally SDA changes only when SCL is low, means SDA is otherwise, otherwise SCL STA will be changing when SCL will be low. This is something which we'll see like quite apparently in the coming diagrams of the signals. So after the start condition, I square C basically uh, conveys the address of the receiver. Means what is the address transmission? Data is always sampled on the rising clock edge. Okay, so what it means that whenever data is available on the data lines, it can be sampled on the rising edge of the clock. So rising means when the clock line is changing state from low to high. This is a rising clock edge. Data is always sampled on the rising clock edge. Address is 7 bits, means कि address जो होगा इसका 7 bit का होगा, and an 8 bit indicated read or write means कि 7 bits के बाद 8वीं bit होगी वो बताएगी the operation will be read or write operation. And again remember this will be with respect to the master. So master को read करना है या write करना है, it depends. So this 8 bit will basically identify the operation, either read or write, after the 7 bits of address. And then address is assigned by Phillips and XP for a fee of OS करवा पड़ना है. Means कि addresses जो assign किए जाते हैं क्योंकि ये standardized है तो of course आपको you have to pay for the addresses, special addresses. If you want, you have to pay the Phillips and XP for that. So we have to proceed further because I guess more time will be used here to describe the timing of this signal diagram. So I square C data transmission transmitted just like address. So 8 bits. This is the data transmission. Again मतलब इसमें भी जो data transmission है वो is similar like SPI. आपके पास transmit होगा just like address. जैसे 8 bit transmit होता है address का, उस तरह को data transfer होगा. अच्छा for a write के लिए master transmits, slave acknowledges, और for a read के लिए slave transmits करेगा और master acknowledge करेगा. तो ये आपको जहन में रखना होगा कि राइट और रीड जो है ये क्या क्या किसके परस्पेक्टिव में कहा जाता है और उस केस में मास्टर स्लेव का रोल क्या बनेगा. तो राइट है तो मास्टर राइट कर रहा है, रीड है तो मास्टर रीड करेगा, एंड स्लेव विल डू द अदर ऑपरेशन ऑफ कोर्स. तो उसके बाद ट्रांसमिशन कैन बी कंटिन्यूड, आप ट्रांसमिशन कंटिन्यू कर सकते हैं यानी सब्सिक्वेंट बाइट्स सेंड किया सकती हैं, कंटिन्यू इसको रख सकते हैं अंटिल मास्टर क्रिएट स्टॉप कंडीशन. अच्छा अब हमें स्टॉप कंडीशन देखनी होगी कि व्हाट इज स्टॉप कंडीशन, बट बिफोर दैट ये हमारे पास कुछ सिग्नल्स हैं इसमें, फॉर एग्जांपल एसडीए, और ये एसडीए एग्रीगेट एसडीए और एसडीए फ्रॉम ट्रांसमीटर है और एसडीए फ्रॉम रिसीवर है. एसडीए का मतलब होता है डेटा लाइन होती है और ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल जब ट्रांसमिशन होगी या ट्रांसमिशन की जाएगी तो फोर्स डेटा कौन एसर्ट कर रहा होगा, मास्टर यानी ट्रांसमीटर, और रिसीवर जो होगा वो उसको रिसीव कर रहा होगा जो कि स्लेव होगा इन केस में. तो ये दोनों इंडिपेंडेंट बिहेवियर बताया कि दोनों के एंड से क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा ऑन द डेटा लाइन. तो यहाँ से ये समझ आ रही है कि जब ट्रांसमिशन होगी एच डी ए फ्रॉम ट्रांसमीटर से तो उस केस में ये जो डेटा लाइन बता रहा है हमें, ट्रांसमीटर विल बी चेंजिंग द स्टेट ऑफ द डेटा लाइन. ये जो कोई भी डेटा है एक्स वाई जेड रैंडम, इट डजंट मैटर, बट इट इज बेसिकली टोटल इन कंट्रोल ऑफ द ट्रांसमीटर. और इस केस में एच डी ए फ्रॉम रिसीवर से जो आ रहा होगा, रिसीवर उस पर कोई भी एक्शन नहीं कर रहा होगा until unless the data is transferred. What actually receiver does is acknowledge the transmission of data by asserting the data line low for one clock cycle. Means कि जब मास्टर या ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसमिट कर रहा होगा, जब डेटा ट्रांसमिशन हो रही होगी उस दौरान जो रिसीवर है वो बेसिकली स्टेज इन दिस पोजिशन, यानी वो डेटा लाइन का कंट्रोल उसके पास नहीं होता. और जैसे ही 8 बिट ट्रांसफर हो जाएंगी तो उसके बाद 9th क्लॉक पल्स के ऊपर जो रिसीवर होगा वो इसको पुल डाउन करेगा, टेक इट डाउन टू द लो लेवल फॉर 1 क्लॉक साइकिल ड्यूरेशन एंड देन गेट्स बैक इट टू हाई लेवल. दिस इज द एक्नॉलेजमेंट बिट. इसे हम एक्नॉलेजमेंट बिट कहते हैं क्योंकि नीचे हमें यहाँ समझ आ रही है कि SCL फ्रॉम मास्टर. तो ये देखिए 9 क्लॉक पल्सेस में डेटा ट्रांसफर होता है I2C बस के अंदर. 8 clock pulses होती हैं for the 8 bits of data and the 9th clock pulse will be of course for the acknowledgement bit जो कि receiver उसको acknowledge करेगा data reception को. ठीक है, तो now this is something we should have to keep in your mind कि जो acknowledgement है always comes from the receiver, चाहे वो master हो चाहे वो
स्लेव होगा, रिसीवर ऑफ डेटा जो होगा वो रिसीवर वो ही हमेशा एक्नॉलेज करेगा और वो हमेशा क्लॉक की 9th उस पे होगा, 9th क्लॉक पल्स पे एक्नॉलेजमेंट किया जाएगा। ओके तो स्टॉप या रिपीटेड स्टार्ट और नेक्स्ट डेटा बाइट ये सारी चीजें पॉसिबल है आफ्टर दिस 9 क्लॉक पल्स। क्या आप इस ट्रांजेक्शन को स्टॉप भी कर सकते हैं या रिपीटेड स्टार्ट करके इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डेटा बाइट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। We will get into the details also about all these in the next slides. तो ये इसकी ट्रांसमिशन है। उसके बाद अब आता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, व्हाट इज द स्टॉप कंडीशन। स्टॉप कंडीशन में क्या होता है, इफ यू रिमेंबर द स्टार्ट कंडीशन ये थी कि व्हेन एचसीएल इज इन द हाई स्टेट, तो एक ट्रांजिशन आती थी एचडी को फ्रॉम हाई टू लो। इस केस में द ट्रांजिशन इज द अदर वे अराउंड, यानी क्लॉक की स्टेट तो वही होगी हाई, जब क्लॉक हाई स्टेट में होगी उस वक्त अगर एचडी के ऊपर लो से हाई ट्रांजिशन आएगा तो दिस आइडेंटिफाइज या दिस basically explain the stop condition. This behavior of signals explain the stop condition. So master actually pulls SDA high while SCL is high. Means कि SDL high, SCL high रहेगा, जब ये high state में होगा उस वक्त SDA की लाइन को low से high पे अगर आप basically उसको transition करते हैं इसकी, तो that is basically the indication of the stop condition। और again ये master करता है, ये स्टार्ट और स्टॉप कंडीशंस मास्टर जनरेट करता है, ये स्लेव नहीं करता। ऑल्सो यूज टू अबॉर्ट ट्रांजेक्शन, अगर आपने ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट करना है तो भी आप इसी किस्म का बिहेवियर उस पर अप्लाई कर सकते हैं मतलब फिजिकल लाइंस के ऊपर। तो दिस इज द I2C स्टॉप कंडीशन। ओके नाउ अब अगर हम इसको ओवरऑल उस परस्पेक्टिव में देखेंगे तो I2C basically this is the start condition and this is the stop condition, means कि whatever whenever the master and slave has to start communication with each other, so it will always started with the start condition. There will be start condition in the beginning, then in the middle there will be a data transmission of course between master and slave in either direction, it doesn't matter. And by the end of the transaction, there must be a stop condition. And these two conditions, start and stop, will be generated by the master, क्योंकि ये दोनों master के control में होगी। क्योंकि हमने अभी देखा कि जो transaction होती है वो हमेशा controlled या initiated होती है by the master। और we have only these couple of signals in the case of I2C bus। तो ये हमारे पास start and stop condition है। You have to memorize these two patterns. What is the pattern for the start condition and what is the pattern for the stop condition? तो ये आपको memorize करना होगा, ठीक है, कि start condition maybe you are asked to plot the start condition for the I2C bus। वो start condition की क्या होती है, उसका identification क्या है, क्या pattern होता है signals का, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और इस तरह से stop condition का pattern क्या होता है ये आपको ज़हन में रहना चाहिए। दोनों किस्म में क्लॉक विल बी इन द हाई स्टेट होगी हमेशा, ये इसमें भी हाई स्टेट में और क्लॉक इसमें की हाई स्टेट में, बस ट्रांजिशन डिफरेंट है। इसमें हाई टू लो ट्रांजिशन होगा क्योंकि यूजुअली एचडीआई लाइन होती है वो हाई स्टेट में होती है बिकॉज ऑफ द पोलर ब्रिस्टर। जब ये हाई से लो ट्रांजिशन करेगी तो दैट आइडेंटिफाइज द स्टार्ट कंडीशन, और जब ये लो से हाई तरफ जाएगी तो दैट इज बेसिकली द इंडिकेशन ऑफ द स्टॉप कंडीशन। एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी डेटा ट्रांसमिशन इन द मिडल ऑफ दीज टू स्टेट्स। तो ये I2C की स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशन होती हैं which hopefully you now अंडरस्टैंड। उसके बाद ये थोड़ा सा एलैबोरेट किया है इसको कि एक्चुअली डेटा ट्रांसफर कैसे होता है I2C बस के ऊपर। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है कि रिमेंबर अगेन ये दो चीज़ हम काफ़ी डिटेल में समझ चुके हैं कि स्टार्ट कंडीशन क्या होती है और स्टॉप कंडीशन क्या होती है। ये तो दीज आर द कंपल्सरी काइंड ऑफ states that exist like before the transaction and after the transaction, और in the middle we have this data transmission। अच्छा अगेन जैसे हमने अभी पढ़ा था सीक्वेंस क्या होगी डेटा ट्रांसमिशन की, I2C के अंदर सीक्वेंस होती है कि फर्स्ट you basically transfer or you transmit the address of the slave with which you want to communicate information। तो पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप भेजेंगे एड्रेस ऑफ द स्लेव, और उसके बाद जो एड्रेस जो कि 7 बिट का होता है तो 8th बिट के ऊपर हमारे पास जाएगी रीड एंड राइट की बिट होती है कि इधर इट विल बी अ रीड ऑपरेशन और अ राइट ऑपरेशन। और ये रीड और राइट में बताया था ये मास्टर के पर्सपेक्टिव से होते हैं कि मास्टर को रीड करना है या मास्टर को राइट करना है। So that will be the 8th bit of the I2C after the start condition here we have the address of 7 bits and 8 bit will be the read write bit। उसके बाद there will be a data on this line, फिर आप data transmission होती है और वो depend करता है कि how many bytes you have to transfer from one place to another।
तो दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द एप्लीकेशन, ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। और फिर वंस यू आर डन विद द ट्रांसफर ऑफ डाटा, फिर देयर विल बी अ स्टॉप कंडीशन एट द एंड ऑफ द सेशन। अच्छा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये है कि इफ यू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द क्लॉक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एवरी नाइन्थ क्लॉक बिट जो है वो इस एक्नॉलेजमेंट बिट होती है यानी एवरी नाइन्थ क्लॉक साइकिल विल बी यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एक्नॉलेजमेंट बिट। तो ये जब बाइट कंप्लीट होगा तो उसके बाद इंटरप्ट विद इन स्लेव हो सकता है अगर आपने इसको इनेबल किया हुआ है। तो दिस इज बेसिकली इसे हम कहते हैं स्टार्ट और रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन। अगर आपने स्टार्ट विद इन द ट्रांजेक्शन, आप दोबारा से स्टार्ट कंडीशन जनरेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू कीप द सिस्टम लाइंस विद यू फॉर अनदर ट्रांजेक्शन, तो ये भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल इसके भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीस्टार्ट कंडीशन। ये तब होता है जब फॉर एग्जांपल मास्टर या कोई भी जो है जिसके पास व्हिच बेसिकली होल्डिंग द कंट्रोल ऑफ द बस डज नॉट वांट टू रिलीज द कंट्रोल। जब आपको कंट्रोल रिलीज नहीं करना एंड देयर इज अ रीजन फॉर दिस, ऑफ कोर्स यू वांट टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू समवेयर एल्स, उसके लिए आप रीस्टार्ट कंडीशन जनरेट करके बस को होल्ड कर सकते हैं। बट इफ यू हैव नथिंग मोर टू ट्रांसफर टू एनीवन, देन ऑफ कोर्स you can generate, a master can generate the stop condition. So this is basically a simple uh, operation of the I2C protocol. तो इसमें ऐसे आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो बस ये आपको याद रखना है कि इसका पैटर्न या इसका फ्लो फॉर्मेट क्या होता है, कि स्टार्ट कंडीशन क्या है, स्टॉप कंडीशन क्या है, इनिशियली क्या किस किस्म की इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है, उसके बाद डेटा ट्रांसफर किए जाते हैं। तो अब आप इसको जरा और अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंडेड व्यू दिखाऊँ इसका, तो दिस इज द एक्सपेंडेड व्यू है। और ये एक सिंपल एक्सपेंडेड व्यू है कि अगेन देयर इज अ स्टार्ट कंडीशन हियर एंड देन यू कैन सी द एड्रेस, 7 बिट्स एड्रेस होता है, एंड देन वी हैव दिस रीड राइट बिट जो कि 8 में रीड राइट की बिट जाती है, और उसके बाद भी है द एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब ये कि हर बाइट के बाद एक्नॉलेजमेंट की आपको बिट भेजनी पड़ती है एसटीए लाइन के ऊपर। तो नाइन्थ क्लॉक जो होती है वो एक्नॉलेजमेंट की होती है। इसके बाद ये जो लाइन बता रही है देयर कैन बी मच मोर थिंग्स बिटवीन दीज टू स्टेट्स। और फाइनली जब आप डेटा ट्रांसफर कर लेते हैं, अपना लास्ट बाइट ट्रांसफर कर लेते हैं, तो फिर नाइन्थ क्लॉक पल्स के ऊपर एक्नॉलेजमेंट आई और आखिर में स्टॉप कंडीशन जनरेट हो गई। ठीक है, तो दिस इज बिटवीन मास्टर एंड स्लेव। मास्टर इस केस में ट्रांसमीटर है और स्लेव इस केस में रिसीवर है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना लाजमी है कि इवन ऑन द लास्ट बाइट देयर वाज अ एक्नॉलेजमेंट बिट अवेलेबल ऑन द डेटा लाइन। यानी इवन की लास्ट बाइट के केस में भी एक्नॉलेजमेंट की बिट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम रिसीवर टू द ट्रांसमीटर, जो कि इस केस में स्लेव है। ये बिटवीन मास्टर स्लेव है। इस पॉइंट को मैं फर्दर एलैबोरेट करूंगा इन द फ्यूचर। ओके, सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट डायग्राम जो कि उसी पिछले डायग्राम को रिप्रेजेंट करती है। तो वी हैव दिस स्टार्ट और रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन एंड वी हैव स्टॉप और रिपीटेड स्टॉप कंडीशन, सॉरी स्टॉप और रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आप या तो स्टॉप कर सकते हैं या रिपीटेड स्टार्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज रिमेनिंग इंफॉर्मेशन इन द मिडल इज द सेम व्हिच वी डिस्कस बिफोर। तो दिस इज द नॉर्मल पैटर्न और नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द I2C कम्युनिकेशन सिग्नल्स। ये दो ही फिजिकल सिग्नल एग्जिस्ट करते हैं, और इनके ऊपर जो क्लॉक सिग्नलिंग होती है या डेटा सिग्नलिंग होती है वो उसका मैकेनिज्म इस तरह से है। तो जो फ्लो है दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, कि हाउ इट स्टार्ट्स एंड हाउ इट फिनिशेस, and what is the first byte and what is the 8 bit of the first byte, and then how you transfer the further byte on the same line, and what is the procedure to hold the control of the physical lines. So ये सब बात हमने की है। अब मैं इसको फर्दर एक दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद अनदर डॉक्यूमेंट व्हिच इज फ्रॉम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। एक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का डॉक्यूमेंट है, वो बड़ा उन्होंने अच्छा एक डॉक्यूमेंट बनाया है, उसके अंदर उन्होंने काफी चीज एक्सप्लेन की हुई है। तो वहां से मैं इसको फर्दर इसकी डिटेल देते हैं, लेकिन आखिर में इस लेक्चर के अंदर यानी कि इस स्लाइड्स में ये वाला पॉइंट आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि उस टेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स के डॉक्यूमेंट में भी आएगा। तो चलें, लेट्स कंटिन्यू विद द टेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट फॉर नाउ।